कंटिन्यू करिबा। सो इमोशनल इंटेलिजेंस तो प्रथम कथा है इमोशंस कौन है ना तापर हम इंटेलिजेंस को जीवा मुझे शेयर कर दिए बाकी ग्रुप रे टिके इमोशनल इंटेलिजेंस ना देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो तुम इथिक्स एज ए पेपर एडेड होता तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मोस्ट आम कह कॉम्पिटेंट एरिया और डिमांडेड एरिया फ्रॉम वेयर वी एक्सपेक्ट एटलिस्ट सिंगल क्वेश्चन कि गोटे क्वेश्चन आसू आमर एक्सपेक्टेशन कि एटलिस्ट वन क्वेश्चन आसो इमोशनल इंटेलिजेंस रो ना जिते तुम आसो इमोशनल इंटेलिजेंस सब मन रख कि जिते तुम सिंप्लीफाई कर जिनस को सेते भल प्रथम कही से इमोशन तापर कही इंटेलिजेंस सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मिक्सचर ऑफ टू वर्ड गोटे हूँ तुम इमोशन सिंपल आम कह इमोशन देन हूँ इंटेलिजेंस बस ये दुईटा वर्ड बुझीपार तो ये दुईटा वर्डर मिक्सचर होती इमोशनल इंटेलिजेंस ताले इमोशन कौन ना जिते मु लिखा सहित तुम मैंने भी लिखी देव इमोशन इज व्हाट ए स्टेट ऑफ माइंड इज अबाउट so is about state of mind is a state of mind तो इमोशन कौन ना गोटे स्टेट ऑफ माइंड हूँ समस्त को बुझा पड़ू तो इमोशन कौन ना सिंपल आम कह इज ए स्टेट ऑफ माइंड और बुझा पड़ू यस सर ये हूँ गोटे स्टेट ऑफ माइंड ना जो कहे इंटेलिजेंस ताले इमोशनल इंटेलिजेंस कौन now to understand and manage the emotion to understand and इमोशन इमोशन को बुझीबा और ताकू मैनेज करने को कहा जाए इमोशनल इंटेलिजेंस तो इमोशन कौन सिंपल स्टेट ऑफ माइंड से स्टेट ऑफ माइंड टा कौन हो पारे जमती लव गोटे इमोशन फियर गोटे इमोशन बुझीपार नहीं सेमती एंगर कथा नहीं जो इमोशन दिज आर द इमोशन बुझीपार नहीं मनीष मात्र कि इमोशन तो रहा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो पारे गोटे इमोशनटा जोटा अच्छी दैट कुड बी स्ट्रॉन्ग दैट कुड बी वीक इमोशन तो इमोशन कौन ना गोटे स्ट्रॉन्ग हो पारे कि वीक हो पारे तो इमोशन कौन आम बुझे स्टेट ऑफ माइंड दैट इज व्हाट से लव हो पारे फियर हो पारे एंगर हो पारे एंजाइटी हो पारे बुझीपार कि नहीं तो दैट इज से दैट ये सब आसगला देन दैट कुड बी ए स्ट्रॉन्ग इमोशन हो पारे कि वीक इमोशन हो पारे ओके दैट कुड बी स्ट्रॉन्ग कि वीक इमोशन हो पारे ना जो कहे इंटेलिजेंस आम ए बुझीगले ना तुम कह सर इमोशनल इंटेलिजेंस देन व्हाई इट वाज added or incorporated into the syllabus कारण ह्यूमन मात्र की इमोशन रही मैनेज जदि आम न कर आमर ऑफिस रे जो प्रुडेंसी बा जो आमर एबिलिटी टू वर्क दैट विल रिड्यूस बुझीपार नहीं फॉर एग्जांपल मु कहि लेट्स से जनकर प्रिलिम एग्जाम क्वालिफाई होनी से तार झुरुची इमोशन कौन मोर होनी दुखी अच्छी से सैड तो सैड भी गोटे कौन दैट इज इमोशन तो सी तार दुखी होकी अच्छी किंतु से जी गोटे घंटा पे भावता कि हाँ जहाँ है किंतु मु एमती दुखी है 2 मास 3 मास 6 मास जी गड़े देवी मोर लॉस हो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ इमोशन ताकू जी मैनेज करदेला से नेक्स्ट टाइम सक्सेस पाइबो ना पुणी प्रिलिम को अपेक्षा करिवो तो दैट इज द मैनेजमेंट सो जदि एटा को मैनेज कल ताले ताको कौन मिलिबो यू विल हैव सक्सेस इन हैंड तेणुक ऑफिस रे जो आम इमोशन को मैनेज करुचे इन द पब्लिक लाइफ ताले तुम कौन सिविल सर्विस माने सिविल सर्वेंट माने कोठी रोचंत इन पब्लिक लाइफ सो दे नीड टू मैनेज द इमोशन सो दैट देयर एफिशिएंसी आम कहवा देयर एफिशिएंसी ऑफ वर्क विल इम्प्रूव तो इमोशनल अच्छा ये तो बुझीगल ताले इमोशनल इंटेलिजेंस कौन ताले इमोशनल इंटेलिजेंस कह सिंगल सेंटेंस रे टू मैनेज
and control your emotion कौन सिंपल आम कहे ना आम टू अंडरस्टैंड एंड टू मैनेज योर इमोशन इमोशन को जानिबा ताकू मैनेज करिबा जदि तुम गोटे सेंटेंस लिख सिंपल लिख इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स टू नो द इमोशन टू अंडरस्टैंड द इमोशन एंड टू मैनेज द इमोशन मैनेज करिबा इमोशन को ओके ताले इमोशनल इंटेलिजेंस एज द वर्ड कॉइन्ड बाय whom it was coined in 1990s it was the word को coined करा जाइथिला by whom John Mayer okay it was John Mayer in 1990 coined he coined the word emotional intelligence ता परे तांको परे आउ किछि लोक असले लाइक पीटर सॉरी गोल्डमैन सर तो फॉर एग्जांपल तुम गोलमैन सेटा डैनियल गोलमैन पीटर साल्वेरे पीटर साल्वेरे आसले देन डैनियल गोलमैन so these are the people associated or they have contributed ते जो डैनियल गोलमैन नाटा समस्ते सुनिथिबो डैलियन गोलमैन that Goldman is the person who has popularized this emotional intelligence ये जो word को जदि कौन से लोक अधिक यूज करि थाए बा पॉपुलराइज करि थाए that is the Daniel Goleman who is a psychologist ए निजे होचंती जने कोन द साइकोलॉजिस्ट ओके तो ताले कॉइन किए कला ना मेयर जॉन मेयर एंड पीटर साल्वे किंतु पॉपुलराइज किए कला गोलमैन मीनिंग कौन ना टू अंडरस्टैंड मैनेज द इमोशन को कहवा इमोशन कौन आम बुझीगले टाइप्स ऑफ इमोशन मध्य थाई परे इमोशन कुड बी स्ट्रॉन्ग इमोशन कुड बी वीक ताले इमोशनल इंटेलिजेंस अर्थात इमोशन को मैनेज करवा फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑफिस नहले आम सेमती झुरुथिबा अच्छा इफ द गोलमैन ताले बास जेतले इमोशनल इंटेलिजेंस आछिबो तमे दीटा ना टिके लिखिबो काना सो जॉन मेयर कथा लिखिबो गोलमैन कथा लिखिबो ताले मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज गिवन बाय गोलमैन के डैनियल गोलमैन ओके तो ये सबुठो अधिक कंट्रीब्यूशन देइचंती तो से तांको मतरे इमोशनल इंटेलिजेंस कोन सो अकॉर्डिंग टू हिम द इमोशनल इंटेलिजेंस refer to the capacity of recognizing one's own emotion. Capacity to recognize one's own emotion. It's a capacity to know the what one's own emotion. तो इमोशन को जानिबा ओके एंड अदर्स आज वेल तो ये हैला इमोशनल इंटेलिजेंस बुझिपार तेणु करके ताली एट्रिब्यूट्स भी तार थिबो तेणु करके ताकू जानिबा तार बुझिपार ताकू रेगुलेट करिबा कारण इमोशनल इंटेलिजेंस आल्सो रेफर्स टू कोन मैनेजिंग ऑफ इमोशंस तो इमोशन को जदि मैनेज करिबा दैट इज द इंटेलिजेंस तो सिंपल जहाँ पढ़ी से लिखो इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स टू नो द इमोशन टू अंडरस्टैंड द इमोशन एंड टू मैनेज द वन्स इमोशन दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस ओके ताली इमोशनल इंटेलिजेंस जदि हमर जानिगले तार मीनिंग जानले गोलमैन कथा कहले मेयर कथा कहले इमोशनल इंटेलिजेंस ताले आम एबिलिटी करिबा के जानिबा अच्छा आउ गोटे कौन ना इमोशन को आम यूज करके किसी जिनस अचीव करी हुए यू कैन ऑल्सो अचीव समथिंग्स बाय यूजिंग द इमोशन तो इमोशनल इंटेलिजेंस मीन व्हाट बुझे आम इमोशन को पॉजिटिव वे रे यूज करबा यू नीड टू यूज द इमोशन इन पॉजिटिव वे फॉर एग्जांपल तुमको कहीं गोटे कहीदे अरे तू वैसे ही पारिबु नहीं है से दिन तुम एक 12 घंटा पढ़िया बस दिन शोच उठी न 2 दिन पर उठिकी बस
ବୁଝିପାରୁଛ? तो दैट इज नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक अच्छे से जी कहला तुमको बाधि देन तुम्हें से दिन टार्गेट नहीं कि आई हैव टू क्रैक द ओएस मत क्रैक कर एट एनी कस्ट दिन को 5 घंटा कि 6 घंटा जोटा प्रुडेंस जोटा हेल्थी कि लेट्स से 8 to 10 hours आई विल डिवोट फॉर द स्टडी सो दैट एंड ताप प्लानिंग करा खाली एमती नहीं कि प्लानिंग करा सो दैट तुमको किसी ना किसी सक्सेस मिल डन। ना कम्स टू द एपी आम जी इमोशनल इंटेलिजेंस मीनिंग बुझीगले ना कम्स टू द कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कंपोनेंट कौन? सो कंपोनेंट जदि कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू गोलमैन सॉरी कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस components 1 being self aware, component 2 managing emotion, component 3 having self motivation, handling reaction, ओके तो ये रहिबो ना एठी हमें कौन हैंडलिंग रिएक्शन दैट कुड बी वर्बल एंड नॉन वर्बल मैंने वर्बल एंड तमें इमोशन रे आसी काकू गाली गुलस कर जाउछ काकू पिटी दउछ तो वर्बल हे परे नॉन वर्बल और फिजिकल अब्यूज भी हे परे physical abuse मत हे परे so these are the things we need to handle properly तो these are the shortens हमें कहबा कि emotional intelligence so component आउ कौन ही परिबो this is also to manage other emotion as well to manage others emotion as well केमिति गोटे जगह गाड़ी एक्सीडेंट हो जाइए ना यू आर द डीएसपी देयर तो ये लोक मानकर इमोशन एंगर ये इमोशन कौन एंगर तो लोक को केमिति से एंगर को मैनेज करवा दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस हाँ कि नहीं ना कौन कौच बुझीपार कि नहीं तेणु दैट डज नॉट मीन्स ऑलवेज द सेल्फ मैनेजमेंट दैट कुड बी द मैनेजमेंट ऑफ अदर्स इमोशन एज वेल बाकी लोक मानकर कौटी रायट्स हो बुझीपार फेयर फेस्टिवल एत भिड़ थाए ना तो इमोशन लोक को मैनेज करा पड़ो लोक इमोशन ओके तो ये सब हमको देखा पड़े ना इमोशनल इंटेलिजेंस जो आम डिस्कस करुचे आउ कौन हो पार एनिवन सर तांकर गोलमैन चार्टा ये थिला कोन सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट सोशल मैनेजमेंट यही चार्टा ऊपर सर से कहथिले ऑलरेडी मु कहि देछि बीइंग जेमति कि सेल्फ बीइंग सेल्फ अवेयर सेल्फ मोटिवेशन है ना ये सब मु कहि देछि हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन टू मैनेज द अदर इमोशन अपार्ट फ्रॉम दैट इज इंटरनल मोटिवेशन बा मु जाकू कहली कि सेल्फ मोटिवेशन सोशल स्किल आउ कोन सोशल स्किल मु एक्स्ट्रा ऐड सोशियल करूछि हेबनी हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप नहीं नहीं हाँ सेटा सेम मुझे एक्स्ट्रा ऐड करूँ एंड एम्पाथी एंड व्हाट एम्पाथी सो गोलमैन जदि देखिबो चारटा जिनस कहिथिले गोलमैन है ना सो अकॉर्डिंग टू गोलमैन 4 थिंग्स दे आर व्हाट बीइंग सेल्फ अवेयर मैनेजिंग इमोशन हैविंग सेल्फ मोटिवेशन रिकॉग्नाइजिंग द इमोशन ऑफ अदर्स ओके ये रहिबो तुमरो चारटा बुझिपारछ किंतु मु ता व्यतीत सोशल स्किल एम्पाथी
these are other I have added extra to the what component of emotional intelligence. Now emotional intelligence रो में component देखिए apart from the Goldman components other components ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ना emotional intelligence ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ମୋ ମତରେ other intelligence ବି ଅଛି ଯେମିତି apart from emotional intelligence there must be ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଯେଟାକି ଆମେ କହିବା verbal intelligence physical intelligence temporal intelligence ମୋ ମତରେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଆନ୍ସର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଟ୍ସ ସେ ଆମେ କହିବା ଭର୍ବାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେମିତିକି ଜଣେ ପୋଲିସ ଏବେ ଜଣେ ଚୋରଟାକୁ ଥାନାରେ ଆଣିକି ଗାଳି ଦେଲେ କେହି କିଛି କହିବନି ରାସ୍ତାରେ ଗାଳି ଦେବ ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ ମାଡ଼ ଖାଇବନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର କି କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିନିଷ କହିବା ଦରକାର ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନା ଫିଜିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତମେ ରାସ୍ତାର ଉପରେ କାହା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଦେବ সেটা কোন হব দ্যাট ইজ নট ফিজিক্যাল ইন্টেলিজেন্স সো হোয়াট দ্যাট উড বি আমি কহ ফিজিক্যাল ইন্টেলিজেন্স না ହେଇପାରିବନି ନା କ'ଣ କହୁଛ ସାଫଲ୍ୟ ହେଇପାରିବ ହଁ ସାର୍ କାରଣ ସାର୍ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫିଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହିପାରିବା ଟେମ୍ପୋରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ ପ୍ଲେସ୍ କଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲେ ଠିକ୍ ହବ ସେଟା ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସୋ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେ କହିବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଟେମ୍ପୋରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କରିପାରିବ ଫିଜିକାଲ ଭର୍ବାଲ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବ ତ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବି ଦେଖିଥିଲେ नाउ दैट मीन्स आम कह इंटेलिजेंस विथ टाइम एंड स्पेस मध्य तुम कहीपर कि इंटेलिजेंस विथ टाइम एंड स्पेस ओके तो ये आम ताली इमोशनल इंटेलिजेंस कौन सिंपल मु कहली कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट वन्स इमोशन एंड others to achieve the objectives to achieve the what objectives and to achieve the objectives बस खत्म तार कंपोनेंट्स हम देखिले इमोशन रो मीनिंग मु कहिदेली इमोशन कोन द स्टेट ऑफ माइंड दैट कुड बी लव हे पर एंगर हे पर हैट्रेड हे पर किछि हे पर एंजाइटी हे पर पुनी इमोशन को हमें दी भाग कले स्ट्रांग हे पर वीक हे पर इमोशन कुड बी स्ट्रांग कुड बी वीक बुझ पड़े देन इंटेलिजेंस मीनिंग कहिदेली तो दीज आर द थिंग्स वी हैव मूव्ड ऑन नेक्स्ट आसीबा कि इमोशनल तो हम बुझिगले इंटेलिजेंस बुझिगले नाउ व्हाट विल बी द ताली एसेंस कौन हम कहबा कि देन व्हाई इट इज नीडेड व्हाई इट इज की इन लीडरशिप यदि तुमको कहा जाए कि व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज की इन लीडरशिप की इन लीडरशिप व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज की इन लीडरशिप why sir decision making process okay decision making then anyone else good relationship, हाँ को तापर कौन ही परिबा performance of work, okay performance mental health, social harmony social harmony Best utilization of human resource. best utilization of issues okay resource को मैनेज करिबा resource मैनेजमेंट आ कौन ही परिबो क्राउड मैनेजमेंट ही परिबनी बुझिबो नहीं ही परिबनी sir work culture related issue भी लिख परिया problem solve हो परिया better understanding the situation
सिचुएशन को सपोज मुझे जमी कहली गोटे जगह एक्सीडेंट हो जाए फेयर हो फेस्टिवल हो ये सब सिचुएशन को से बुझीबा जानिबा कौन हो बुझीपार नहीं दैट विल आउ कौन कर मैनेजमेंट हो पारे साधारणतः मैनेजमेंट हेल्प करे फॉर एग्जांपल भाव तुम देखिए ना बड़ बड़ लीडर को केमती माने इमोशन को यूज करते मैनेज करती जमी मोदीजी कथा नहीं जाओ से जो जाए से भाया कथा कहे उल्टा कथा कहले लोक पिटबेनी तुम राम मंदिर इनागुरेसन कह आउ कौ कथा तो से राम को ऊपर खाली कह तो लोकंर इमोशन को जानी से बुझीपार एंड तो इमोशन को जानिकी से मैनेज करती तो सो दैट कौन बेटर तुम जिनस को माने कौन कर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पारिबा आमे मु कहूनी के माने राम को सहित मुझे आर्ट करवाटा ठीक नुह बिकज मतलब नहीं तो आम कौन राम इट सेल्फ इमोशन बुझीपार तो ताकू मैनेज करने लोक चाहिए ना लोक कहे से इमोशन थाउ राम इट सेल्फ इमोशन बुझीपार जमती जगन्नाथ दे आर इट सेल्फ इमोशन तो लोक से इमोशन को मैनेज करेंगे नहीं सो बेटर टू कीप विथ देम so that will improve the self confidence these would be that means आमे कहबा लीडरशिप रे ये रिफ्लेक्ट हबो एंड ओवरऑल आमे कहबा कि आउटकम भलो रहबो जो ऑब्जेक्टिव टा फुलफिल ही परिबो दैट वुड बी द इमोशनल इंटेलिजेंस रो आमे कहबा तो गोलमैन कथा कहितली मु मेयर्स कथा कहितली इमोशनल इंटेलिजेंस को बाकी तुम जो मॉडल वगैरह दिखाई से मॉडल किसी का दरकार नहीं है ठीक अच्छे डन हो इमोशनल इंटेलिजेंस ना कहीं किसी ऐड करने चाहूँ एनीवन डन विथ दिस सुश्री किसी ऐड करिवो और No, sir. Same, sir. डन now people comes to the status of civil service values and ethics in administration. Now another important topic होची तमर कोन emotional intelligence is wrapped status of public service values and ethics in administration. So this is another topic तुम सिलेबस रे अछि तो जेते कम पढ़िबो प्रिसाइज पढ़िबो भलो केना अधिक पढ़ी तो दबो खुशी रे मने रहबोनी तेणु जेते कम पढ़िबो बेटर माने मु भाबे इट्स माय थॉट सो स्टेटस ऑफ पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ताले पब्लिक सर्विस रो स्टेटस वैल्यूज कोन एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन आर मीनिंग कोन बुझी छ मते को पढ़िबा तो आमे आर मीनिंग कोन बुझी छ से कहूची स्टेटस ऑफ पब्लिक सर्विस वैल्यूज अर्थात वर्तमान टाइम रे पब्लिक सर्विस रो वैल्यूज कोन कोठी वेयर स्टेटस बा वेयर क्वेश्चन मार्क तुमको कोन लागुची एंड इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इथिक्स कोठी अछि जो पब्लिक सर्विस बने बा सर्वेंट बने पब्लिक सर्विस रे अछंती तांकर पब्लिक सर्विस वैल्यूज कोठी केते दूर रे अछि बुझि बचने हाउ मच इज देयर एंड हाउ मच इथिक्स इन देयर इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हां कि नहीं ना कोई परिबनी सफल बुझा पड़ुची तो ऑब्जेक्टिव कोन के टू नो द ethical standard where the society is where the values of the civil servant where the ethics of the civil servant is lies when it comes to the administrative or administration कोठी अछि तुमको लागुची तले तुमको कोन लागुची कोठी अछि whether that is high standard or that is low standard or that is governed by certain laws certain regulations कोन लागुची ताले is status कौन
Anyone? And that status is determined by whom? यदि तुमको कहा जो ये जो status determined by whom? By what? Anyone? So the values and the ethics of the public administration, the status determined by what? कौन है गेला? By standard of public service delivery, sir. Standard of public service delivery. So that would be ध्यान से सुनो. So when it comes to the status, है ना, जेमती तुमको पचारिबो अरे तुम प्रिपरेशन रे स्टेटस कोन तुमको मोर एठी अछि मु मेंस लेखुची दैट इज योर स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन. सेमती जेतर कहउची कि स्टेटस ऑफ पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड इथिक्स एंड व्हाट डिटरमाइन्स. नाउ दैट स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय कोड ऑफ इथिक्स. ताले हम गोटे पॉइंट कहि परबा कोड ऑफ इथिक्स. केने एठी कोन होची एठी सबू लॉज लेट्स ए कोड ऑफ इथिक्स 1997 that determines what will be the status of values and ethics in public administration. The code of ethics. Okay, बाकी में code of ethics को पढ़ीबा. Public Service Bill 2007. Public Service अर्थात बिल 2007. तो सेमान को अनुसारे this should be the status. आउ कौन है परिबो? Now All India Service Act 1951. All India Service Act 1951 that determines, that shapes the status of ethics and values in the public administration. All India Service Act 1951, Code of Ethics 1997. ध्यान से मन रखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट. सर सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 भी बिल्कुल लिखी पारो, किसी डाउट नहीं, 100% लिखी पारिबो. द सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964. सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964. आओ ये सब ऑटमोस्ट यू हैव टू रिमेंबर एट एनी चॉइस. मतलब नो चॉइस मुखे भी एनी चॉइस था नहीं, मतलब यू हैव नो चॉइस टू रिमेंबर दिस थिंग. कारण ये सबू तमे आज जदि न पढ़िबो ट्रेनिंग रे गले पढ़िबो. तमे जेतर सर आउ ट्रेनिंग सर पीसीओ ता रिकमेंडेशन भी उठे थिला तार स्टेटस. हाँ कहबी सब कहबी. तो ये सब सर आउ आज हाँ ना हम कहि दउची गोटे डीओपी हां डीओपीटी मैनुअल भी उठे. हाँ. तो दैट मीन्स तुम आपको जदि पढ़िब ये सब जदि तुम जानिल कि दीज थिंग्स डिटरमाइन योर स्टेटस, ताहले तुम जानिगल कि मते ए अनुसार काम करे अछि, आ अनुसार काम करे अछि. दीज आर द एक्ट्स दैट डिटरमाइन्स योर स्टेटस. सेथिरे ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 भी अछि ना. ऑल इंडिया सर्विस रूल 1964, All India Service Rule 1968 also there. Again Ethics Codes 1997 तो मु लिखि देछि, ता अंडर भी अछि बहुत सारा जिंस. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट गवर्नमेंट रो मध्य रूल्स एंड रेगुलेशन थाए. कार स्टेट गवर्नमेंट रो रूल्स तार किछि रूल्स थाए. लेट्स से यू एज एन सिविल सर्वेंट may be posted under the union government or the UTs or state. तो सेमान को डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट लॉज रूल्स रेगुलेशन थी. सपोज तुम ओडिशा गवर्नमेंट अंडर रे काम करूछ, तो ओडिशा गवर्नमेंट माइट हैव ए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन दैट विल शेप द व्हाट इथिकल स्टेटस ऑफ द सिविल सर्वेंट. हाँ कि नहीं? हो बुझा पड़ुछ समस्त को, हाँ कि नहीं? डन. तो एमती आम बाकी जिनस भी आम डिस्कस करवा. तो सर बाकी जिनस आम लेट से एआरसी कथा कही परिबो, हाँ कि नहीं? एआरसी कथा कही परिबो. सेकंड एआरसी जो तुम रिपोर्ट आसला तो सेटा मध्ये तुम कही परिबो. सो दीज आर द थिंग्स आम ये सब इंक्लूड करि परिबा ना. अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 309 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 309 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
Article 312 of Indian Constitution, they also shape the status of public. ये सब हुए ना तुमको सर ये सब आर्टिकल्स कौन, these articles ये माने कौन करती तमें जानছো कि civil servants are regulated, let's say all India services will be regulated by whom? Both, हाँ कि नहीं ना बुझा पड़े खाकू, both by the central government and state government regulate करती, but ultimately lies on what? Central government, हाँ कि नहीं, ultimately lies on whom? Immediate effect किए दबो state government, but ultimate effect किए दबो ना এটা বুঝা পড়ুন কাকু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। লেটস সে তুমি জনে আইপিএস और आईएएस तुमको जॉब रु सस्पेंड करि परिबो स्टेट गवर्नमेंट, ना कि तुम जॉब नहीं परिबोनी। जॉब किए नब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं परिबो, डीओपीटी को जीवो इनक्वारी हबो, से इनक्वारी बुझिपारछन तार बहुत लंबा प्रोसीजर अछि, पुणी प्रेसिडेंट पाखु रिपोर्ट जीवो, प्रेसिडेंट साइन करिवो, देन तुम जॉब रु खत्म बुझिपारछन। तो immediate effect will come from the state, but ultimate effect आसिबो कोठी सेंट्रल गवर्नमेंट। Now article 9 of Indian Constitution, it talks about कि पार्लियामेंट एम्पावर करे काकू ना स्टेट लेजिस्लेचर को टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द सिविल सर्विसेज। आर्टिकल 309 ध्यान से मन को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 309 empowers the state legislature to make the laws and the rules and the regulation for the recruitment and the condition of the services person appointed to the civil services. Article 312 empowers the parliament to do the same. Hope you are getting me. So this in case of the central government and the 9 in case of the state government. Ta betita from time to time to hete. So these are the things that shapes the status, or they determine what will be the status of the civil service ethics and values of the civil servant while in the administration रे कौन हबो। डन ना गोटे गोटे भी ताले में देखिबा। हाँ साफले आउ कौन कहूच कुह सर एती तो ओके। नाउ वी विल कम्स टू एवं गोटे गोटे में देखिए। तो आर्टिकल 309 एंड 12 मन रखी पारे एवं, सो दैट कुड जनरेट सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू, एटलिस्ट किसी वैल्यू जनरेट करेंगे वन इट कम। ये क्वेश्चन तो आसो ये डाउट नहीं किसी, ये जो क्वेश्चन मुझे तुमको पढ़ाऊँगी ये आसो, कारण एटा को छाड़िले क्वेश्चन जदि देख जदि न आसला दैट इज ए मतलब आई वुड नॉट बी सरप्राइज, मु सरप्राइज तो हेबिनी, किंतु मो मत ये क्वेश्चन 100% आसवा कथा 100%। तुमको सर कौ बेसिस आप कहते कारण इथिक्स कहीं आड कराई, ऑब्जेक्टिव कौन, जदि से जानी जो पिलाटा सर्विस को जीव, इफ दैट कैंडिडेट इज नॉट अवेयर कि व्हाट सेव्स द इथिक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो लाभ कौन, ताले तुम ये पेपर आड कहीं करूल, ताले पेपर आड कर किसी जस्टिस नहीं ना। ठीक कहूँ ना भूल कहूँ, होप तुमको बुझा पड़ो, बुझीपार ना मुझे कहूँ ना बुझा पड़ोनी Yes, sir. हाँ ना। तेणुक एथर क्वेश्चन बनवाटा 100% मो मत बने, ना पेपर ऑब्जेक्टिविटी रही बुझीपार। हाँ जदि किए जदि गोटे भाव जड़े क्वेश्चन बनाऊँ सी न बनैला ना, दैट वुड बी देयर फॉल्ट, आमर नुह, कारण लॉजिक हुए ये पार्ट रू क्वेश्चन बनवाटा 100%, दैट भी प्रत्येक वर्ष बनू मो मत, कारण ये जिनस जदि जानवनी जन सिविल सर्वेंट तार जो डिटर्मिनेंट को जानी से ट्रेनिंग रे जाइए शिखब, ना सर्विस रूल पढ़ी आसो डेली जॉब जीवा पूर्व सर्विस रूल पढ़, सर्विस रूल तो ट्रेनिंग रे पढ़ा हम ना, तो ये कहीं शिखबनी, अलरेडी हमको दिए जाइए सिलेबस रे, ताकि पिला पढ़ी जी से ट्रेनिंग देदेल खत्म हो गला कहानी बुझीपार। तेणुक एथर क्वेश्चन बनवाटा बने बिकज डायरेक्टली सिविल सर्विस लिखाई और जोड़ा इथिक्स में बहुत जरूरी। तेणुक आम एक्सपेक्ट करवा यू क्वेश्चन आसो, जहाँ आम 3 दिन क्लास कले वी एक्सपेक्ट एटलिस्ट 3 to 5 क्वेश्चन आसी जाओ और 6 क्वेश्चन यू आसी जाओ 3 दिन में बुझ 6-7 क्वेश्चन तो यू आसी जाओ, मतलब मोर एक्सपेक्टेशन। तेणुक ये जो आम कहे ना स्टाटस ऑफ पब्लिक सर्विस, ना स्टाटस ऑफ पब्लिक सर्विस डिग्रेड भी हो पारे अपग्रेड भी हो पारे ना। मत ए कह व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, whether the status of public service is
मुविंग डाउनवर्ड और अपवर्ड एमती क्वेश्चन भी पचारि पारे ना एठी आमे कोन कले के फैक्टर शेपिंग द स्टेटस ऑफ द सिविल सर्विस values and ethics in administration but they might ask you कि जदि आम इथिक्स पेपर को आड कले एत सब हो ट्रेनिंग दिया होची then still the status is somewhere degrading then why सर सर बैलेंस्ड अप्रोच भी रखि परिया सर गोटे तो सर डिग्रेडिंग होछु करप्शन पॉलिटिकल नेक्सस एगुडा एग्जांपल दे परिया आ सर किछि किछि लिखि परिया हेलो हाँ को हाँ ताले आमे कहबा अच्छा ये जो भाव जदि डिग्रेड होची जदि काहाकू भी फील होची तुमको लाइक ओके somebody is having stance कि yes are degrading सर डिग्रेड डायरेक्टली न कहि कि आमे जो एक्सपेक्ट करथिले नॉट ऑप्टिमम लिखि परिबा कि सर एज पर द टाइम इट हैज नॉट ग्रोन ऑप्टिमम एट इट्स ऑप्टिमम लेवल तमे कहछो कि what we envisaged we have not achieved यस सर हाँ सेटा भी तुम कहीपर कि जितेबले होता बा ये सब ऑब्जेक्टिव होता बा आम जो पढ़ुले तो ये ऑब्जेक्टिव होनी ताप रीजन कौन ताहले प्रथम कथा यू आंसर बाहर अच्छा ऑल इंडिया सर्विस एक्ट किसी कमी अच्छी कि जदि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट किसी कमी अच्छी तेणुक ऑब्जेक्टिव फुलफिल होनी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्स जो आसला से किसी कमी थी किंबा एथिकल जो कोड अच्छी से किसी कमी थी जदि एमानकर कमी रहिबो बिकॉज दे सेव और दे डिटरमाइन्स द इथिकल स्टैंडर्ड जदि इथिकल स्टैंडर्ड बा पब्लिक इथिक्स वैल्यूज जो आम कहते इथिकल स्टैंडर्ड वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन एमाने जदि वीक हो जस्ट इमेजिन कर इफ दिस कोड्स ऑफ कंडक्ट दिस रूल्स विल बी वीक ताले इथिकल स्टेटस भी वीक हो हाँ कि नहीं ठीक कहूँ ना मु ताले इथिकल स्टेटस विल बी यस आल्सो सर वीक ताले आमको या जांच करिया पड़िबो ध्यान से पढ़िया पड़िबो गोटे गोटे एते टाइम तो नहीं कि पूरा आम इथिकल कोड पढ़ुचे 1907 को उठेच 1997 तार पूरा प्रोविजन गोटे गोटे पढ़ुच विच आर द स्ट्रिक्ट एरिया विच आर द वीक एरिया एंड वेयर दैट वीक एरिया लाइज एंड दैट इज बीइंग एक्ट एज ए और दैट इज बीइंग यूज एज अ लूपहोल्स फॉर द सिविल सर्वेंट मैंने ताकू लूपहोल्स भाव यूज करके स्टेटस को वीक कराऊँगी सेटा ही पारे तो ये पढ़ी हेनी ए होप यू आर गेटिंग मी तमने भी तो मतलब बुझी पारुथो कि हाँ आम कौन डिस्कस करने चाहूचे तेणु करके जदि आम कह कि हाँ जदि जोटा तुम कह कि व्हाट वी एनविसेज्ड वी हैव नॉट अचीव्ड वी आर स्ट्राइविंग फॉरवर्ड टू अचीव या तुम कहीपर कि वी आर स्ट्राइविंग फॉरवर्ड टू अचीव हे भी पारे मु मना करूनी कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग जमती तुम कह कि कर्मयोगी कथा मिशन कर्मयोगी तो मिशन कर्मयोगी कौन ना टू स्ट्राइव फॉरवर्ड टू अचीव दैट स्टेटस को इम्प्रूव करने जदि आम कर्मयोगी कथा नहीं जावा दैट इज टू इम्प्रूव द स्टेटस ना मना कर मना करहब फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दि जाऊ जदि आम कहबा आउ ट्रेनिंगटा कंपलसरी कर दियो ना कि कंपलसरी जेमिति कि फॉर एग्जांपल किसी सिविल सर्वेंट अच्छी दोज हु आर अवॉइडिंग द ट्रेनिंग if someone is avoiding the training do we have some sort of punishment for that कौन तापाई पनिशमेंट अच्छी कि जदि अच्छी केते कौन सेटा गोटे 1000 फाइन और दैट इज सस्पेंड मतलब सस्पेंशन फ्रॉम द जॉब तो जड़े ट्रेनिंग को जदि स्किप करुच्ची तापाई पनिशमेंट कौन आउ जदि तापाई डिफेंडेड पुणी किए करुच्ची फॉर एग्जांपल मु कहिबी काना जेते ट्रेनिंग विल लीड्स टू व्हाट मोर कैपेबिलिटी तो ट्रेनिंग टाइम टू टाइम हवा दरकार जदि तुम से स्टेटस को इम्प्रूव करिवो इधर जो डिटरमिनेंट अच्छी ताकू स्ट्रॉन्ग करो रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग आनो और ट्रेनिंग को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाओ या को आम करिकी इम्प्रूव करि परिबा ओके जा भी हो तो जदि तुमके इथिकल स्टैंडर्ड कथा मु कहबी बा इथिक्स कोड ऑफ इथिक्स 1997 ये डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि पर के कोड ऑफ इथिक्स 1997 कोड ऑफ इथिक्स ना दिस इज व्हाट कोड ऑफ इथिक्स वर्क कोड ऑफ इथिक्स ध्यान से मन को दिस इज वर्क कोड ऑफ इथिक्स ना दिस वर्क कोड ऑफ इथिक्स 1997 कौन हुए
that shapes the ethical standard of the civil servants. Okay, values in administration. ना ये कौन कुए এটা बहुत ইম্পর্টেন্ট কথাটা তাই আমরা দেখুছে কোড অফ ইথিক্স 1997 ର ফিচার্স ফিচার 1 খালি মু কিওয়ার্ড লিখিবি to uphold the rule and respect the human right. Rules and respect human right. This is the first provision of the Code of Ethics 1997. Then it talks about transparency. Then it talks about transparency. Then it talks about objectivity. Then it talks about objectivity. It talks about what? Objectivity. It talks about impartiality. It talks about impartiality. Okay. It talks about timely deliver. Or delivering. Okay. Then quality of services. It talks about quality of services. कहले जिते भल जिनस आउ कौन तुम लिखिदेव मन को जहाँ आस भल जिनस आउ कौन लिख पर नो पर्सनाल गेन भल जिनस सब तो लिख आउ कौन अच्छी बुझीपार नहीं नो एक्सप्लॉइट नो एक्सप्लॉइटेशन नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एबे तुम बुझीपार आउ कौन ओनली गुड थिंग्स को लिखिदेव खत्म जा जी जानिच सो दीज आर द थिंग्स कुहे किए जमी पर्सनाल गेन आसबनी टाइमली डेलीवर कर रिसोर्स को ऑप्टिमम यूज कर तो ये सब जहाँ जानिचे तुम लिखिदेल दीज आर द कोड ऑफ इथिक्स आपको आम कौन कौचे कौन है हेलो कटिगला कहीं चलती तो क्लास वॉइस आसुनी कि तुम को No, sir, clear, sir. ए कोड ऑफ इथिक्स टा बुझी परिबो ना व्हेन आई से कोड ऑफ इथिक्स तो सिंपल तमे डेट टा मन रखिबो डेडलाइन दैट इज 1997 तब को सर कोड ऑफ इथिक्स रे कोन अछि जा भलो जिंस जानि से लिखि देबो किछि घुसिबार नै खता ट्रांसपेरेंसी इम्पार्शियलिटी टाइमली डेलीवर क्वालिटी सर्विसेज नो एक्सप्लॉइटेशन नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बस रिसोर्स मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑफिस सब लिखि दियो किछि नै जा खत्म केते इजी देखो तो एमती जनरलाइज करके पढ़ो आ तुम कह ना सर मुझे गोटे लाइन मन रखी कौन कही से किसी मन रही कि जनरलाइज कर दियो कि न पढ़ी अधिक लिखी पलि आस तो सब जनरलाइज कर जीएस अर्थात जनरलाइजेशन ताको पर्टिकुलर करने चेष्टा करनी मन रहा कहीं बहुत जिन पढ़ार अच्छी तेणु ये है तुम कोड ऑफ इथिक्स 1997 खत्म 2 मिनट बुझीपार अच्छा सेमिति जिते तुमको कह कि ऑल इंडिया सर्विसेज तुमको कह लेट्स से तुम जान तुमको कह डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 तुम जान पढ़ी न के तुम इथिक्स से जान ना ये क्वेश्चन आसो बोली क्वेश्चन कौन आसी ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 कौन करिवो तुम पढ़ी न भाव यू हैव नेवर गॉन थ्रू दिस सब्जेक्ट बाय टॉपिक तुम एक्सपेक्ट भी कर नथलो कि इट वाज दे वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन So first we can start with what is All India Services? ओके ठीक अछि तीन टा गला आर गोटे टेक्निक शुण केमती इजिली मन रखिबो से कौन कही ऑल इंडिया सर्विसेज सेठी हमें कौन पढ़ी थे एथरे कही कोड ऑफ इथिक्स दीटा टिके डिफरेंस अच्छी कोड ऑफ इथिक्स टा केवल से इथिक्स कथा कहे ये कहे ऑल इंडिया सर्विसेज ये तीन टा
IAS IPS IFS इंडियन फॉरेन फॉरेस्ट जहाँ भी हो ये जो तीन सर्विसेज ताले जने लोक जो लोकटा ऑल इंडिया सर्विस रे काम करिवो से ही हेई परे सी हेई परे जावे ताले से कहा कथा कहबो से यूनिफॉर्मिटी कथा कहबो ताले ऑल इंडिया सर्विसेज काहे कि हमें रखीचे बिकॉज टू हैव यूनिफॉर्म सर्विस कोड हाँ कि नहीं यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट दी कंट्री पई ऑल इंडिया सर्विसेज मीन्स यूनिफॉर्मिटी इन द सर्विसेज से बताना ऑल इंडिया ताकि देश सारा यूनिफॉर्मिटी रहिबो ट्रेनिंग सेम रहिबो पेमेंट सेम रहिबो जोठी जुबो खत्म कहानी सो दैट यूनिफॉर्मिटी आउ कौन इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी बुझिपारछन एबे ताले आसबा नेशनल यूनिटी भी कहि परिबा ए माने कोन करूछंती नेशनल यूनिटी हाँ कि नहीं एबे बुझिपारछ ऑल इंडिया रो मीनिंग कोन होची चेंज होची केमती ना मते को तम पाखरे यू आर हैविंग डीएसपी आमर जे ओपीएस क्वालिफाई करो डीएसपी होची हाँ कि नहीं तहसीलदार होची डेप्यूटी कलेक्टर होची बीडीओ होची ताले पुणी ये आईपीएस आईएएस आईएफएस रो दरकार कौन तमर तो ओएफएस तो अच्छे ना आमर एठी ओडिशा फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंस सर्विस जाको मैं कहूचे ताले सेठी भी ओएफएस अच्छी एठी भी फॉरेस्ट अच्छी रेंजर माने किंतु सेठी कौन डीएफओ डायरेक्ट बिकॉज दे आर हैविंग मोर एफिशिएंसी एठी कौन एफिशिएंसी एठी कौन कॉम्पिटेंस they are more competence they will have more efficiency professionalism एमान को पाखरे कौन रहिबो professionalism बुझी परछनी they will have more competence एबे बुझी परछ all India means what more competence more professional more efficiency more unity integrity adaptability अधिक adaptability more adaptability से ऑल इंडिया बा ए ओडिशा पिला को छाड़ दिया आसाम रे सिक्किम रे तापर कोन होची देखिबो दे विल हैव adaptability डन objective खत्म so this is what the provision or the objective of All India Services Act 1951 so while let's say तमे जने IPS or IAS ऑफिस रे बसिला बले make sure that you are being governed through this act make sure or makes that means remember that the seat where you are sitting your seat is being governed through this act through this what आम कहबा एक्ट के तुमको कहुई यूनिटी मेंटेन कर एफिशिएंसी हाई रहा दरकार तुम इंटीग्रिटी रख नेशनल यूनिटी जमती खत्म ना हो एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन आज वेल आ कौन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जदियो तुम ऐड हैनी बट यू मे राइट दिस वन कहीं भी कहब ना से पॉलिटिकल पार्टीज मैंने कौन कहती के यार कॉन्स्टिट्यूशन को मानु ना तुम काम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करवा कहना ये माने कौन लॉ को प्रोटेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ काम करिवो ना ताले कौन मतलब टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ये सब आसीगला बस डन तो आपको हमें देखी ताले 1997 के देखी 1951 हम भी देखी सो दीज आर वी आर गोइंग थ्रू व्हाट द स्टेटस ऑफ सिविल सर्विस इन एथिक्स and public administration okay hope you बुझी परिबो डन बाकी तमरे एथरे कोन इश्यूज चैलेंजेस आसीबो देखो चैलेंजेस आसीबो ये तो हमें स्टेटस देखले किंतु चैलेंजेस कोन ना एठी करप्शन देखा जाउची चैलेंजेस तो अछि ना एठी अकाउंटेबिलिटी नहीं एठी करप्शन देखा जाउची ये तो चैलेंजेस बहुत अछि नेपोटिज्म देखा जाउची ताले चैलेंजेस लिखिबा हम ताले आमी तो लिखिले एबे ना कम टू द इश्यूज एंड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड इश्यूज कोन
ताले जो स्टेटस टॉपिक रे में इश्यूज को ऐड करिबा ना कम टू द इश्यूज ताले चैप्टर ना कोन चैप्टर नाम मन अछि समस्त को द स्टेटस ऑफ सिविल सर्विसेज of what ethics in civil services and administration. ठीक अछि ना issues कौन issues is political intervention एटा तो होची ए गोटे इशू issues is nepotism फेवरेटिज्म भी होची ना एटा होनी फेवरेटिज्म भी होची करप्शन आउ कौन होची एनीवन ये तो इश्यूज अच्छी ना ये स्टेटस को डिग्रेड करोची lack of professionalism and Rate the capability. patient. इनफॉरमेशन लीक भी होची आउ कौन होच लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी colonial mindset, कहला colonial mindset, sir. कॉलोनियल माइंडसेट जेमती कि फॉर एग्जांपल बाबू कल्चर ସେଇଟା कल्चर हाँ एटा कहि परिबो ସେଇଟା बुझि परछनी बाबू कल्चर बुझि परछनी एंड ये माने भाबुचंदी लोक आम पाखु आसु आमे लोक पाखु जिबानी किंतु ए मानकर ना कोन पब्लिक सर्वेंट बुझि परछनी जापि सो दीज आर द इश्यूज ना तेणु तुमरो Rate tapeism and excessive bureaucratic control. एटा कहि परबो रेट टेपिज्म कहि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स कहि परबो एंड हाँ आउ गोटे मानकर इगोइज्म भी तुम कहि परबो कि इगोइज्म बुझि परछनी ए मानकर पाखरे ईगो बहुत तो साधारणतः इगोइज्म देखौचंदी बुझि परछनी एंड आरोगेंट तुम कहि परबो कि सम अछंती आरोगेंट some are not following constitutional principles बा constitution को bypass करके माने किसी act करे पे चाहूचंती they are inward doing mindset. बुझ परछनी filthy practices तम बुझ एमती भी बहुत होची गोटे कुआई छी तम गोटे मर्डर केस को प्रूफ करे पे आईपीएस को कुआई छी आ ओडिसा रे जेते केस हुए आईपी गवर्नमेंट विरुद्ध रे असले किए करे त जानि छौ टेंशन ना नाटा